This question is IIT previous year question. This question is based on Faraday first law of electrolysis. Now I am going to solve this question. In this question, how long a current of 3 ampere has to be passed through a solution of AgCl to coat a metal surface of 80 centimeter square with a 0.005 millimeter thick layer. Density of silver is 10.5 gram per centimeter cube. According to this question, whenever 3 ampere of electric current passes through an electrolytic solution of AgCl, then after electrolysis, metal Ag deposited at electrode having density 10.5 gram per centimeter cube. Thickness is 0.005 millimeter and surface area of metal is 80 centimeter square. Then T is equal to what? From Faraday first law of electrolysis, W is equal to ACT by NF. So T is equal to WNF by A into C. This is the formula. With the help of this formula, we can calculate time. Now, according to given data, what is W? What is W? Here, W is equal to area into thickness into density. Okay. Now, reading of thickness in millimeter. So, 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. We can write 10 millimeter is equal to 1 centimeter. So 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter. So now 0.005 millimeter is equal to 1 by 10 into 0.005 not millimeter, centimeter. Okay. Now 0.005 divided by 1000 and after replacement of decimal 5 into 10 to the power minus 4 centimeter. This is thickness. This is thickness. Okay. You can take a screenshot. After that, we can solve this question. Now, by using this formula, we can calculate time of electrolysis of AgCl electrolytic solution. So, the formula is T is equal to your formula T is equal to W replaced by area into thickness into density multiplied by N into F divided by A into C. Okay. Now, what is area? Surface area 80 centimeter square multiplied by what is thickness 0.005 millimeter or 5 into 10 to the power minus 4 centimeter multiplied by density 10.5 gram per centimeter cube and multiplied by N is 1 multiplied by Faraday. Value of Faraday is 96500 Coulomb or ampere second. Okay. Divided by A into C. A for atomic weight of silver 108 gram. And now
C is electric current 3 ampere 3 ampere. After calculation we can get time is 125.09 second, and after calculation in these four options, option C is correct. This question is very important question of previous year IIT. Please take a screenshot, and next video will discuss about next question. आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 8 फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है. ये क्वेश्चन आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कहता है ए 100 वाट्स 110 वोल्ट इज constant lamp is connected in series with an electrolytic cell containing CdSO4 solution. What weight of Cd will be deposited by the electric current following for 10 hours? अगर 10 आवर तक इलेक्ट्रिक करंट को CdSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दिया जाए तो वेट ऑफ डिपोजिटेड जो है Cd हम लोगों को कैलकुलेट करना है. तो हम लोग इसका आंसर करने के लिए W इज इक्वल टू क्या सा फॉर्मूला लगाएंगे. W इज इक्वल टू ACT/NF. A क्या है? एटॉमिक वेट. देखिए यहाँ एटॉमिक वेट दिया हुआ है तो हमको W निकालना है. A एटॉमिक वेट ऑफ CD है जो 111 कितना है 112.4. ये हम ग्राम में लिखेंगे. करंट ठीक है, करंट भी हम निकालेंगे, टाइम भी निकालेंगे. टाइम दिया हुआ है यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 आवर्स. तो T हम पहले लिखते हैं 10 आवर्स. 10 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड कर लेते हैं. टी भी निकल गया. एन निकालने के लिए क्या करेंगे? CdSO4 का जब डिसोसिएशन होगा तो CD पे ये क्या होगा डबल प्लस और SO4 डबल माइनस. तो n इज इक्वल टू हमको 2 मिल रहा है. n कितना मिल रहा है 2. ये नंबर ऑफ चार्ज है कैडमियम पर आफ्टर डिसोसिएशन. तो n हमको कितना मिल रहा है 2. n जब मिल गया तो हम लोग F भी करेंगे कैलकुलेट. F कितना है 96500. कूलम लिखेंगे या एम्पियर इंटू सेकेंड. ये इसलिए लिखते हैं कि कूलम भी लिख सकते हैं. Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू टी. Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी. सो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड. तो हमने क्या किया कूलम नहीं लिख के एम्पियर सेकेंड लिख दिया. अभी जो हम लोगों का जो रेस्ट बचा हुआ है वो है C. यहाँ पर करंट लिखेंगे तो करंट जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक फार्मूला होता है ना. गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम जब चलते हैं दिए गए डेटा के हिसाब से तो यहाँ पर वोल्ट इनटू एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है वाट. ये फॉर्मूला वोल्ट इनटू एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है वाट. तो यहाँ पर हम लोगों को जो दिया हुआ नहीं है वो क्या है एम्पियर दिया हुआ नहीं. एम्पियर कैसे निकालेंगे? एम्पियर इज इक्वल टू यहाँ पर निकल जाएगा वाट बाय वोल्ट. वाट बाय वोल्ट. वाट बाय वोल्ट. वाट कितना दिया हुआ है 100. कितना दिया हुआ है 100 वाट्स. तो 100 और डिवाइड बाय वोल्ट कितना दिया हुआ है 110. ये क्या निकल गया एम्पियर. ठीक है, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे. इस रीडिंग को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हम लोगों को अभी क्या मिल गया है दूसरा. अभी हम लोगों को यहाँ पर हमने निकाला है करंट C फॉर करंट. तो हमको C निकल गया है. इसको मैं रिप्लेस करता हूँ. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो हम लोगों को जो C निकल के आया है C फॉर करंट वो कितना आया है 10/11 कितना एम्पियर. आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. डेटा आ गया है. फिर इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अभी 112.4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना है 10/11 एम्पियर. स्पेस कम है. इसको हम लोग क्या करेंगे इसको रिप्लेस करते हैं. नीचे लिखेंगे W इज इक्वल टू कितना आ रहा है A है 4 ग्राम 100
112.4 ग्राम। करंट कितना निकला है 10/11 एम्पियर। फिर मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, टाइम कितना है 10 आवर, 10 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अभी इसको फिर डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे एन से, एन कितना निकला था 2 फैराडे 96500 कूलम और एम्पियर इंटू सेकेंड। देखिए जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो W का जो रीडिंग आएगा वो ग्राम में आएगा। जब कैलकुलेशन किया गया तो देखा गया कि इसका 19.05 ग्राम क्या आएगा कैडमियम। और जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन में ऊपर से नीचे आने पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर तो करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू। दिस क्वेश्चन इज IIT previous year question. This question is based on Faraday first law of electrolysis. Now I am going to solve this question. According to this question, a 100 watts 110 volt in coincident lamp is connected in series with an electrolytic cell containing CdSO4 solution. What weight of CD will be deposited by the electric current following for 10 hours? According to this question, whenever 10 hour of electric current passes through an electrolytic solution of CdSO4, then what weight of cadmium deposit at electrode during electrolysis? Now W is equal to ACT by NF. With the help of this formula we can calculate deposited weight of deposited cadmium. Okay, but what is A, what is C, what is T, what is N and what is F? Okay, now what is A? A for atomic weight of cadmium from given data of question, atomic weight of cadmium is 112.4 gram. What is C? C is not here. So according to given these data, we can calculate volt into ampere is equal to watt. So ampere is equal to, we can write watt by volt. Reading of watt 100, volt is 110. So current is here, C is 10/11 ampere. Okay, now I can remove this part. Okay, what is T? Here time is 10 hours. 10 hours means 10 into 60 minute into 60 second. What is N? Number of charge at deposited cadmium. So after dissociation of CdSO4 we can observe Cd double plus and SO4 double minus. N is equal to 2. Okay, so N is equal to 2. F is equal to 96500 coulomb or ampere second, because Q is equal to CT, Q is equal to IT, or charge is equal to coulomb is equal to ampere into second. Okay, so coulomb is replaced by ampere into second. Now these all data we can put in this formula, we can get true result. Now I can remove this data and for calculation of weight, A is 112.4 gram, current is 10/11 ampere or 10/11 ampere. Okay, multiplied by time, 10 into 60 into 60 second. Okay,
N 2 into 96500 coulomb or ampere second, ampere into second, and multiplied by 10 divided by 11. Okay. Now, after calculation of these sums, we can get answer is 19.05 gram. This is the weight of deposited cadmium during electrolysis of electrolytic solution of CdSO4. This is, and according to given answer, option B is correct. Now, in next video, we will discuss about next question of previous year IIT. Thank you.